Hello and welcome to this brand new video of Budding Miners. I am Priyanshu Kumar Giri, your physics and chemistry mentor on this channel. I am currently pursuing bachelor's from IIT Madras, and this video is going to be on molality. So, before beginning the video, like, share and subscribe. Now, let's begin a discussion on molality. Now, what is molality? First of all, it is represented by small m. It is defined as the number of moles of solute per kg of solvent. Simple. Now, its formula will be what? Its formula will be small m equals to number of moles of solute divided by mass of solvent in kg. So, number of moles of solute divided by mass of solvent in kg. Now, box it, learn it, a very important formula. Its unit will be what? Mole upon kg, because in numerator what we have? Moles of solute, and in denominator what we have mass of solvent. So, mole per kg is the unit of molality. So now we know that molality is number of moles of solute upon mass of solvent. Now if you expand this formula, क्या बनता है? Given mass upon molar mass of solute, ये moles आ गए solute के upon mass of solvent. So आप देख पा रहे हो कि molality depends upon mass only. Numerator denominator दोनों जगह mass है. तो we can say molality is mass dependent, and we know that mass is not temperature dependent. So we can say that molality is also temperature independent, not dependent upon temperature. Okay, so we can say that molality does not depend upon temperature. This is a very important point. Unlike molarity, molarity depend करता था टेम्परेचर पे, हमने पहले पढ़ चुका है उसको, हमने पढ़ा है पहले उसको. तो उसको इस बात को नोट कर लीजिए आप. इस पे सवाल डायरेक्टली पूछ लेगा आपसे कि इनमें से क्या टेम्परेचर डिपेंडेंट क्या नहीं है. तो याद रखिए मोलारिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, मोलालिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट. स्मॉल m independent, capital M dependent. So now let's see the difference between molality and molarity. So the first point is the symbol. For molarity we use capital M, for molality we use small m. Second point is the parameter in the denominator in the formula that we studied. So for molarity we have what? In the denominator we have volume of solution in liters. For molality formula, what we had in the denominator was mass of solvent in kilograms. Okay. Third point is temperature dependence. Molarity is temperature dependent. Molality, on the other hand, is temperature independent. Okay. These are the main differences between molality and molarity. Okay. So now let's see an example on molality. Calculate the molality of an aqueous solution of 36 gram NaOH in 50 moles of water. So reaction will look like this. NaOH plus H2O gives us aqueous solution. Now the molar mass of NaOH is 40. For H2O it will be 18. 50 moles of H2O is given to us. First let's get the number of moles of solute, that is NaOH, which will be given mass of molar mass. Now the given mass of the solute NaOH is 36. Upon 40 it will be 0.9 moles. Now for the mass of solvent, that is H2O, is number of moles of H2O into molar mass of H2O, which is 50 into 18, that is 900 grams, which will be 0.9 kilograms. Now for molality, we do what? We divide those number of moles of solute NaOH divided by mass of H2O, that is solvent. 0.9 mole upon 0.9 kg, it becomes 1 mole per kg. The molality of this solution will be 1 mole per kg. Now since the molality is 1, we can say that this solution is a 1 molal aqueous solution of NaOH. 1 molal because molality is 1, aqueous because the solvent is water, and solution of NaOH because the solute is NaOH. So now let's see an example which involves both molarity and molality. Example is, find the molality of a 0.8 molar H2SO4 aqueous solution if the density of the solution is 0.96 gram per ml. मतलब क्या? मतलब हमारे पास क्या दिया है? 0.8 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ H2SO4 दिया है हमको, यानी कि पर लीटर ऑफ सोल्यूशन वी हैव 0.8 मोल्स ऑफ H2SO4. तो अगर हम बोले कि हमारे पास 1 लीटर सोल्यूशन ही है, मतलब मोल्स कितने हो गए? 0.8 मोल्स हो गए हमारे पास. तो मोल्स पता चल गया हमको. अब क्या है मोलालिटी? मोलालिटी क्या चाहिए हमको? हमको चाहिए मोल्स सोल्यूट के और मास ऑफ सोलवेंट. तो सोल्यूट के मोल्स मिल गए 0.8. अब हमको चाहिए कि जो सोलवेंट है दैट इज वाटर, उसका मास चाहिए मेरे को, तो वो निकालना है मुझे. वी नीड टू फाइंड दैट. We know that mass of solute plus mass of solvent will be mass of solution. So mass of H2SO4 plus mass of water will be mass of solution. Now for mass of
H2SO4 we will do what? Number of moles of H2SO4 into molar mass. ठीक है, molar mass is 98. For solution mass we do what? Density into volume. We know that density is mass into mass but a volume, mass by volume. So mass will be what? Density into volume. Now let's put the value. So number of moles of H2SO4 we know 0.8 into 98 हो गया वहां पर. For mass of solution 0.96 into 1000 ml में है, क्योंकि ग्राम पर ml का वैल्यू यूज कर रहे हो आप डेंसिटी का, तो आप ml का वैल्यू यूज करोगे वॉल्यूम का. नाउ लेट्स सॉल्व दिस फर्दर. सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? वी हैव 78.4 प्लस मास ऑफ वाटर इज 960 ग्राम्स. अब मास ऑफ वाटर कितना हो गया यहाँ से? वी हैव 8816 ग्राम, केजी में 0.8816 केजी. अब बात करते हैं मोलालिटी का. तो क्या है? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट. मोल्स सोल्यूट 0.8 बाय 0.8816. वैल्यू कितना आ गया? 0.907. यानी कि कितना मोलर सोल्यूशन है हमारे पास? 0.907 मोलर सोल्यूशन है. ठीक है, दिस इज द वैल्यू. ओके, मतलब कैसे करना है? पहले आप क्या करो कि जो दिया है, ठीक है, उसको कन्वर्ट करो सिंपल टर्म्स में, मोल्स में ले आओ, ठीक है, मास में ले आओ. फिर जो रिक्वायर्ड है उसमें कुछ मिसिंग होगा, उसको निकालने के लिए डेंसिटी का इस्तेमाल करो. ठीक है, यही तरीका है ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने जहाँ पर इंटर कन्वर्जन हो रहा हो आपको टर्म्स का, मोलालिटी, ठीक है, मोल फ्रैक्शन. जब आपको ऐसा टर्म्स का इंटर कन्वर्जन करना हो तो ऐसे तरीके से आप फॉलो करो. ठीक है, पहले आप सिंपल टर्म्स में लेके आओ, फिर जो रिक्वायर्ड है उसको निकालो डेंसिटी के द्वारा. ठीक है, दैट इज द वे. फॉर्मूला डायरेक्ट बन जाएगा आपका, लेकिन फॉर्मूला का उतना यूज करना जरूरी नहीं है मेरे हिसाब से. आप ट्राई करो कि जड़ से सॉल्व करो, गलती नहीं होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि ऐसा सवाल ईजी होता है कंपैरेटिवली, गलती नहीं करना है आपको. और फॉर्मूला बनाओगे तो बहुत फॉर्मूला बनेंगे, आपको हर एक के लिए अलग फॉर्मूला बनाना पड़ेगा. ये तरीका जो है सब पे लागू होगा एक बार में. So guys, that was all about the concept of molality. I hope you liked the video. If you did, then like the video, share with your friends, subscribe, press the bell notification and comment down below your thoughts. See you in the next one.